I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope I am audible to you. Good evening to all. I hope. So today we'll see the next part of your antibacterial drugs. That is nothing but the we'll see today sulfonamides and fluoroquinone antibiotics, their mechanism, their uses, etc., etc. Adverse reactions, indications, contraindications. So today we'll see that what we have seen yesterday. I would like to revise you in a short. So yesterday we have started with our antibacterial drugs. So we have seen a few points yesterday. That is nothing but the what do you mean by antibiotics and what do you mean by antibiotics related terms also. We have also seen this brief history about the antibiotics, and after that we have also seen few terms. So after that I have told you about these things. Then after that we have seen the terms, the classification according to the mechanism of action. We have seen classification. After that, how antibiotic get resistance, how bacteria or microorganisms get resistance to the antibacterial drug. So antibacterial drug resistance we have seen. After that we have seen the certain terms. After that we have seen the certain terms related to. After that we also seen the terms related to antibacterial drug therapy. What do you mean by MIC, minimum inhibitory concentration? What is CDK? CDK means concentration dependent killing. TDK matlab time dependent killing. So remember aminoglycosides and fluoroquinones. Aminoglycosides, fluoroquinones, they exhibit the concentration dependent killing, whereas a beta lactam, macrolide antibiotics, then vancomycin exhibit the time dependent killing. So we have already also seen what is post antibiotic effect, then super infection, what is a probiotics, and what is the role of probiotics. After that we have seen the classification of antibacterial drugs according to the mechanism of action. We have seen 3 times. After that according to the type of organism against which they are active, according to the mechanism of drug action, according to the chemistry, according to the chemistry of antibiotic, we have seen the classification. After that we have seen the according to the therapeutic index. Antibiotics are also classified according to the therapeutic index, we have seen. After that resistance we have seen. After that we have seen the this choice of antibiotic in certain kind of infection, right? So we have seen this bacillus anthracis, etc., etc. So bacillus anthracis, okay, we have seen this, right? If you want to read these charts, these are present in the Pharmacology by Padmaja Uday Kumar. And again certain common types of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द सुपर इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि सपोज इफ यू आर अंडरगॉन द कीमोथेरेपी, सपोज यू आर अंडरगॉन द एंटी माइक्रोबियल ड्रग थेरेपी, तो पर्टिकुलरली आपका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है, there are two terms, narrow spectrum antibiotic and broad spectrum antibiotic. Remember, there are two terms. First one is a narrow spectrum antibiotic. Narrow spectrum means these are the antibiotics which are active against certain only particular type of microorganism. जैसे मान लीजिए एक आधा एंटीबायोटिक है जो सिर्फ आपके निमोकोकाई में एक्टिव है, so that is known as a narrow therapeutic, narrow spectrum antibiotic, right? And suppose if any antibiotic is active against, suppose if antibiotic is active against variety of microorganism, so if antibiotic is active against large variety of microorganism like gram positive, gram negative, है ना, then pneumococci, etc. So if antibiotic is active against a particular type of organism, that is known as a narrow spectrum. If antibiotic active against a variety of organism, known as a broad spectrum antibiotic, right? Now upon use of broad spectrum antibiotic, what happens? Your normal GIT flora, your normal gut flora is also destroyed. Because of that bacterial flora in your GIT is nothing but your immunity. And if use of these antibiotics, broad spectrum antibiotic particularly, kills the microbial flora present in the GIT, and that leads to infection of Clostridium difficile and other organisms, known as a secondary infection or super infection due to decreased immunity. So most commonly organisms causing super infection, first one is Candida albicans. So they causes oral sore throat, then diarrhea and vaginitis. So treatment is nothing but the cotrimazole. Again Staphylococcus or Staphylococci, they causes the enteritis, GIT infection, and drug is a cloxacillin. You can treat it with cloxacillin. Then most common is a Clostridium difficile, so that causes the diarrhea. So pseudomembranous colitis, and that is nothing but the drug used is a metronidazole and vancomycin. Again E. coli is also there, which causes UTI, Pseudomonas. Then Pseudomonas and E. coli both causes UTI. In that case, norfloxacin and carbenicillin, these are the drug used in the super infection. सुपर इन्फेक्शन क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक यूज करते हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उसके कारण क्या होता है कि वो बैक्टीरिया को मार देता है, बट अलॉन्ग विद दैट आपकी जो जीआईटी में नॉर्मल बैक्टीरिया है, हेल्दी मतलब यूजफुल बैक्टीरिया जो विटामिन सिंथेसिस करते हैं, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको भी मार देता है. तो उनको मारने के कारण क्या होता है, आपका इम्यूनिटी कम होता है. इम्यूनिटी कम हो गया तो आपको दूसरा इन्फेक्शन हो जाता है, नोन एज अ सुपर इन्फेक्शन, नोन एज अ सुपर इन्फेक्शन. तो कौन से बैक्टीरिया करते हैं सुपर इन्फेक्शन? कैंडिडिया अल्बिकन्स, फंगस है, स्टेफिलोकोका है, देन क्लोस्ट्रिडियम डिफिकली, ई कोलाई, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, ये सब आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं, सुपर इन्फेक्शन करते हैं. certain antibiotics need to be adjusted in the renal impairment. अगर आपकी किडनी में कोई दिक्कत है, किडनी का फंक्शन कम है, तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक का डोज आपको कम करना पड़ता है. सो इन केस ऑफ किडनी डैमेज और इन केस ऑफ रिनल डिक्रीज रिनल फंक्शन, यू हैव टू डिक्रीज द डोज ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, cephalosporin, vancomycin, then also amphotericin B, ethambutol and flucytosine. So these antibiotics must be, the dose of these antibiotics must be reduced in case of mild renal failure. So reduce dose only in a moderate to severe renal failure. अगर आपका थोड़ा सा ज़्यादा renal failure है तो उसमें आपको metronidazole, cotrimazole, azithromycin, carbenicillin, fluoroquinolone, clarithromycin, इनका डोज कम करना पड़ता है, राइट. सो डोज एडजस्टमेंट इन अ renal failure, also in a hepatic impairment. अगर आपका लीवर का कैपेसिटी कम है मेटाबोलाइज करने का, तो उसमें भी आपको डोज एडजस्ट करना पड़ेगा. आपका किडनी का कैपेसिटी कम है एक्सक्रीट करने का, तो सर्टेन एंटीबायोटिक्स नीड टू बी एडजस्टेड according to your renal function, according to your liver function, right. So mild failure में भी आपको
reduce the dose even in a mild failure. So aminoglycoside, cephalosporin, vancomycin, so amphotericin B, ethambutol. So in case of mild renal failure, you have to decrease dose. In case of moderate renal failure, so metronidazole, azithromycin, cotrimazole, meropenem, imipenem, clarithromycin, fluoroquinolones. So these drugs to be, dose of these drugs to be reduced. So antibiotic need to be avoided, or that should be avoided in case of renal failure. अगर आपका किडनी फेल हो गया है या फिर उसमें ये ड्रग्स नहीं देना है, नैलिडिक्सिक एसिड, नाइट्रोफिरनपाइन, टेराम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Now again, in case of liver failure, you have to adjust the dose of these antibiotics. So in case of liver failure, you have to prevent the drugs should be avoided. You have to, these drugs are contraindicated in case of liver failure. Erythromycin, pyrazinamide, ampicillin, tetracycline, nalidixic acid, pifloxacin, and drug dose is reduced. In case of liver failure, dose of these drugs are needed to be reduced. Chloramphenicol है, metronidazole है, clindamycin, isoniazid, rifampicin, इनका डोज कम करना पड़ता है. नाउ एंटीबायोटिक्स का यूज क्या है ना, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, है ना, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शियस डिसीज. एंड सेकंड होता है प्रिवेंशन. प्रिवेंशन मतलब प्रोफिलैक्सिस ऑफ इन्फेक्शन. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन आप सर, है ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई सर्जरी हो चुका है, सो आफ्टर सर्जरी और एब्सेसिस, तो आपका अगर कोई सर्जरी हो चुका है, सो देर आर चांसेस टू गेट एन इन्फेक्शन. सो इन दैट केस, सो एंटीबायोटिक्स आर गिवन. तो जब आपका सर्जरी होता है तो आपको एंटीबायोटिक देते हैं. क्यों? ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. तो इन दैट केस द यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज अ प्रोफिलैक्टिक. सपोज दैट you got undergone through a particular surgical process, so physician used to prescribe you antibiotic prophylactically in case of surgery, right? Now the surgical wounds can be classified into different type. कि जो आपका जो wound है, that can be called as a clean wound, that can be called as a clean wound, that can be called as a clean contaminated wound, it can be called as a contaminated wound or dirty wound, depending upon the, depending upon the severity of wound or invasion of wound or infection. ठीक है, तो देखो क्लीन वुंड किसको बोलेंगे? सो क्लीन वुंड इज अ इलेक्टिव नॉन ट्रॉमेटिक सर्जरी. तो नॉन ट्रॉमेटिक सर्जरी, इलेक्टिव, नो विसरा और नो ट्रैक्ट, मतलब सुपरफिशियल वुंड है आपको और उसमें कोई भी विसरल ऑर्गन, है ना, तक नहीं गया है वो. सो इलेक्टिव होता है. नॉन ट्रॉमेटिक सर्जरी में भी ये वुंड आता है. नो विसरा और नो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, बाइलियरी ट्रैक्ट और जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट इज एंटर्ड एंड देयर इज नो इन्फेक्शन एट अ साइट. वहाँ पे कोई इन्फेक्शन भी नहीं, उसको बोलेंगे क्लीन वुंड. तो वुंड वेयर देयर इज नो इन्फेक्शन or no break in the technique. Now clean and contaminated wound, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए ले आए. So this type of wound is otherwise clean, but in case of emergency surgery is needed. Then elective surgery with opening of any viscera or tract but minimal spillage. मतलब इसमें थोड़ा सा विसरल ऑर्गन या फिर ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, बट वहाँ पे कोई कंटेमिनेशन नहीं है. नो कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड मटेरियल और पॉसिबली माइनर ब्रेक इन टेक्निक. कंटेमिनेटेड वुंड किसको बोलेंगे? तो ग्रॉस स्पॉइलेज. तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इंक्लूडिंग जीआईटी ट्रैक्ट और है ना, गट रिसेक्शन, ओपनिंग ऑफ इन्फेक्टेड बाइलियरी और जेनेटोयूरिनरी ट्रैक्ट, penetrating injury more than 4 hours old, grafting and chronic wound open, major break in technique, that is a contaminated wound. Dirty wound किसको बोलेंगे? जिसमें pus formation हो चुका है, opening of abscesses और purulent site, pre-operative, है ना, perforations, respiratory, genitourinary tract more than 4 hours old,
according to the National Research Council. So wounds are classified into clean wound or dirty wound or clean contaminated wound. तो clean wound किसको बोलेंगे, है ना, clean wound, clean contaminated wound, then dirty wound. So according to the National Research Council. एक क्वेश्चन इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका था, इसलिए ये लिया है हमने. नाउ नेक्स्ट इज द सल्फोनामाइड्स. सो अगेन sulfonamides was the first antibacterial drugs which was used in the antimicrobial drug therapy. So in a early 70s, 1969, so when Domack observed that there is a Domack used a Domack scientist was used this one dye known as a prontosil red dye. One dye known as a prontosil red dye. So this prontosil red dye was used by Domack scientist for the treatment of E.S. aureus, Staphylococcus aureus in a mice, and later on he found that this prontosil red dye, that is nothing but the sulfamidocresonidine. So it was broken down into the GIT to the sulfonilamide, and it is responsible for the antimicrobial activity. And after that, lot of synthetic molecules they were synthesized and used, and they came in a picture. But what is sulfonamides? So these are the antimicrobial drug containing sulfonamide group. Sulfonamide means what? So antimicrobial drug with the sulfonamide group. These are the drug containing sulfonamide group, SO2NH group, and they are antibacterial as well as non-antibacterial. जो drugs है sulfonamide group containing, SO2NH group containing, so they may be, है ना, first time they were discovered as antibacterial drug, but nowadays those group containing drug are also non-antibacterial. मतलब antibacterial तो है ये, प्लस उसमें कुछ ड्रग एंटी, है ना, कुछ ड्रग्स उसमें एंटी डायबिटिक है, डायबिटिक्स है, एंड एंटी कन्वर्जेंस भी. सो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड, है ना, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनामाइड. तो फिनाइल रिंग, पैरा अमीनो ग्रुप, पैरा अमीनो फिनॉल, पैरा अमीनो, एंड दिस इज अ सल्फोनामाइड, sulfonamide group, sulfonamide SO2NH, right? And this NH2 is replaced with the various types of alkyl chain, various types of side chain, and all sulfonamides they are differing the substitution mostly at this, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के एक substitution लगा दिया. तो sulfonamides are the drug containing sulfonamide group, है ना, SO2NH. Right. Now these sulfonamides they were used in the 1969 or 1970 first time, and there was a question in 2024 also. So prodrug of sulfonamide is nothing but the prontosil red. Prontosil red, this question was in 24 hours. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. वैसे sulfonamides are nowadays outdated drugs, but still they used to ask questions on this. So prontosil red, now it is a dye that is sulfonamidocresonidine, which was broken down into the patient, and which was broken down into the body to the sulfonilamide, which was responsible for the antibacterial activity. This was observed by Domack, okay? And the theory also was proposed for the mechanism of action. I will see it later on. So sulfonamide, the structure of sulfonamide, right? And this one is a structure of para-amino benzoic acid. Now this is a precursor molecule for synthesis of your folic acid. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? बैक्टीरिया, certain bacteria, there are certain bacteria like Staphylococcus aureus and all. These bacteria they utilizes the
पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड. So it is a constituent of medium. जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है जिसमें, उसमें पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड मीडियम में रहता है. So bacteria utilize the PABA, para amino benzoic acid, and convert by using this PABA. They convert PABA into folic acid. So like this, para amino benzoic acid, PABA. So this is converted into dihydrofolic acid by the enzyme dihydroteroate synthase. है ना, मतलब ये PABA is taken up and it is added to a this is added to a जो प्यूरिन बेस होते हैं, प्यूरिन बेसिस, there is addition of purine bases to a PABA by dihydroteroate synthase to form a dihydrofolic acid or dihydroteroic acid. After that there is a addition of glutamic acid by the enzyme dihydroteroate reductase to form a tetrahydrofolic acid. बाद में purines and DNA बनता है. So folic acid is very important for formation of nucleic acid in the bacteria. So bacteria utilizes the para amino benzoic acid. It is from medium, जो कल्चर मीडियम होता है या फिर जो बॉडी का para amino butyric acid है ना. So PABA is converted into dihydroteroic acid by the enzyme dihydroteroate synthase during the synthesis of dihydrofolic acid. So there is addition of purines and glutamic acid to form a dihydrofolic acid. After that tetrahydrofolic acid, because tetrahydrofolic acid is the active form of folic acid. Now sulfa drugs inhibit the dihydroteroate synthase, the formation of dihydrofolic acid. Sulfonamides inhibit this step competitively because they are the competitive inhibitor of PABA. Because sulfonamides and PABA have a similar structure. यहाँ पे देखो, sulfonamides and PABA have a similar structure. That's why they are the competitive inhibitor of PABA. Right? So remember, bacteria synthesize the folic acid from PABA, that is a para amino benzoic acid. So it is a content of medium or surrounding. So PABA is converted into dihydrofolic acid by the enzyme dihydroteroate synthase. So during this, PABA is added with the purines. PABA is added with the purines and glutamic acid. After that, there is a formation of dihydrofolic acid. Dihydrofolic acid is called tetrahydrofolic acid by the enzyme dihydrofolate reductase. Now from that tetrahydrofolic acid is synthesis of purines and DNA. Now sulfa drugs inhibit dihydroteroate synthase or dihydrofolic acid synthesis, and there is one more drug known as trimethoprim which inhibits the dihydrofolate reductase. So this is the mechanism, we will also explain in upcoming part. Now classification of sulfonamides, very important, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. Classification of sulfonamides, very important. Classification part वैसे तो सभी classification important ही है, right? So classification of sulfonamides है ना, IMP. So they are classified based upon their duration of action. Also they are classified depending upon the whether they are used for systemic infection or for topical or for like that. So first drug, sulfur drugs which are used for systemic infection, means they are given for the systemic infection orally. So in that you have first class short acting, second class intermediate acting, and third class that is a long acting. So short acting sulfonamides question already आ चुका है 2-3 बार. So remember sulfadiazine, sulfadimidine, sulfacetamide and sulfamethizole. Sulfadiazine, sulfadimidine, sulfacetamide and sulfamethizole. Intermediate acting थोड़ा सा ज़्यादा है, तो sulfamethizole is intermediate acting, and longer acting is a sulfamethoxy, pyridazine, then sulfadimethoxine and sulfadoxine. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है 2-3 बार.
सल्फाडोक्सिन, सल्फा डायमिथोक्सिन, सल्फामिथोक्सी pyridazine, थैलिन सल्फाडायजोल, सक्सिनिल सल्फाडायजोल, these are the longer acting drug. ठीक है, तो important है. Now longer drugs, sulfa drugs used for the GIT infection, for the treatment of ulcerative colitis. So sulfasalazine, ये क्या है? It is a prodrug converted into sulfonamide and salicylic acid. Salicylic acid will exercise anti-inflammatory effect in a GIT. So that's why ulcerative colitis के लिए use करते हैं. Then topically used sulfa drugs. Then mefenide is not a true sulfa drug, but it has a similar structure with the sulfonamide. That's why. Then silver sulfadiazine, it is topically used for burn. इसके ऊपर भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है. So it is topically used for the burn therapy. Then sulfacetamide is used topically in a oral, so used for the conjunctivitis, ocular infection, used in the treatment of eyes, ocular infection. Now mechanism of action आपने देखा है already. Sulfonamides है ना, inhibit the enzyme folic acid synthase, which convert para-aminobenzoic acid to the folic acid. Inhibition of this enzyme result in the deficiency of folic acid, which causes the injury to bacterial cells. Injured bacterial cells, they are easy to be phagocytosized because bacteria cannot utilize the ready-made folic acid, but our human cell can utilize the ready-made folic acid. Bacteria cannot utilize. So sulfa drugs, they are ineffective in presence of pus और टिश्यू ब्रेकडाउन प्रोडक्ट. जहाँ पे पस होता है, टिश्यू ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पे हायर अमाउंट ऑफ पावा होता है. हायर अमाउंट ऑफ पावा एंड आल्सो हायर अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स. तो इन केस ऑफ pus and tissue breakdown, there is a higher amount of PABA, higher amount of purines. So in that case, so sulfonamides are ineffective because PABA is a competitive antagonist of sulfa drug. So this was proposed, this mechanism of action was proposed by Woods and Field in 1940. That's why it is known as the Woods-Field theory, also known as the Woods-Field theory. तो अगर क्वेश्चन आता है कि Woods-Field theory is related with the mechanism of action of sulfonamides. Theory of mechanism of sulfa drug is not applicable for the mefenide. जो sulfonamide का theory है वो mefenide नाम का drug है, it is not applicable for mefenide because it is not a true sulfa drug. It is not true sulfa drug. Now sulfonamide resistance भी है because nowadays almost all drugs, all bacteria have developed a resistance to sulfonamides. So like स्टेफिलोकोकस है ना, पर्टिकुलरली ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसके लिए यूजफुल थे सल्फोनामाइड्स. नाउअडेज ओनली दे आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन. स्टेफिलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, गोनोकोकाई, ई कोलाई, दे हैव एक्वायर्ड रेजिस्टेंट टू द सल्फोनामाइड्स. स्ट्रेप्टोकोकस फेकलिस इज रेजिस्टेंट टू द सल्फोनामाइड्स. माइकोबैक्टीरियम इज आल्सो गॉट रेजिस्टेंस. तो डाइट में जो फॉलिक एसिड है, डाइट से आपको क्या मिलेगा? पाबा. बैक्टीरिया विल गेट अ पाबा फ्रॉम द मीडियम, फ्रॉम द डाइट. पाबा is converted into dihydrofolic acid. PABA is converted into dihydrofolic acid by dihydroterroid synthesis or folic acid synthesis, and then dihydrofolic acid is reduced into tetrahydrofolic acid, which is required for bacterial pH synthesis by folic acid reductase. Right? Now in the host cell, so if PABA is utilized, our host cell can utilize ready-made folic acid. So what sulfonamide does? Sulfonamides, dapsone, methotrexate, proguanil, these drugs inhibit the folic acid synthesis and prevent the formation of dihydrofolic acid in the parasites. And there is one more drug known as trimethoprim, which inhibits the folic acid reductase. So combination of these are used for sequential block. Now pharmacological action, इनका क्या action है? Pharmacological actions of sulfa drugs, they are mainly bacteriostatic. यहाँ पे याद रखना है
बैक्टीरियल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक. दे आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब ये ग्रोथ प्रिवेंट करते हैं, बट इन अ हायर कॉन्सेंट्रेशन दे मे बी बैक्टीरिसाइडल. इन केस ऑफ यूटीआई, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी किसके अगेंस्ट में एक्टिव है? दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट द वैरायटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो सर्टन क्लैमिडिया फंगस. स्ट्रेप्टोकोकाई, निमोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, गोनोकोकाई, इसके सबके अगेंस्ट में एक्टिव थे. नाउअडेज दे गॉट अ रेजिस्टेंस. क्लोस्ट्रीडिया, बैसिलस एंथ्रासिस, हेमोफिलस स्पीसीज, दे आर आल्सो एक्टिव in case of malaria. Mepenide is used in the malaria also. तो इसका एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन. क्वेश्चन इसके ऊपर आता है. दे आर absorbed from the small intestine. After absorption, sulfur drug binds to the plasma protein depending upon the nature. So 50% drug bonds to plasma protein, particularly albumin. The bound sulfonamide has much less bacteriostatic activity and protein binding leads to prolongation of activity of sulfonamides. Highly protein bound drugs are not so effective in the treatment of acute infection and their duration of action is long. जो ज़्यादा प्रोटीन बाइंड करता है उसका ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा. तो इन द लीवर दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय मेजर pathway known as acetylation. So in the liver they are biotransformed by acetylation. तो acetylation of EN4 साइड चेन. तो जो अमाइनो ग्रुप है वहाँ पे जो साइड चेन है उसका acetylation होता है. Depending on the capacity to acetylate the drugs, some people they easily metabolize the sulfonamides known as the rapid acetylators, and some people will slowly acetylate the sulfur drugs known as the slow acetylators. Now ये जो acetylated metabolites होते हैं, acetylated form sulfur drugs they are ineffective. They has a toxic potential of parent drug, and certain acetylated forms they are poorly soluble in the acidic urine. तो इनका solubility acidic urine में कम होता है, उसके कारण क्या होता है, crystal urea होता है. तो acetylated form of these sulfur drugs they are less soluble or poorly soluble in the acidic urine, and that's why there is a crystal urea. So one of the adverse effect of this sulfur drug is nothing but the crystal urea. It can be prevented by taking plenty of water and fluid and making urine basic, that is alkalization of urine. सबसे कम क्रिस्टल यूरिया आइसोक्सेजोल, सल्फा आइसोक्सेजोल, सल्फिक्सेजोल और सल्फा आइसोक्सेजोल का सबसे कम क्रिस्टल यूरिया होता है. So adverse reaction देखो इनके. So allergic reactions, they can cause allergic reaction on skin like drug fever, skin rash, eosinophilia. They can cause exfoliative dermatitis. Very important allergic reaction is a Stevenson-Johnson syndrome. Stevenson-Johnson syndrome, इसके ऊपर 2-4 बार क्वेश्चन भी आ चुका है. Stevenson-Johnson syndrome, severe dermatitis, बहुत ज़्यादा dermatitis वगैरह, multiform, associated with the widespread lesion on the skin and mucous membrane, particularly with the long-acting sulfonamides. So Stevenson-Johnson syndrome is adverse effect of sulfur drug. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. In a GIT, nausea, vomiting, disturbance of GIT flora, these are the common. They also has a kidney toxicity. There is a crystal urea. In case of acidic urine, जो acetylated drug जो है acetylated drug और acetylated metabolite of sulfur drug, they get precipitated and can cause irritation to the collecting tubules known as a crystal urea. Also can cause albumin urea, मतलब presence of albumin in the urine, hematuria, presence of blood in the urine. Alkalization of urine prevents this crystal urea. तो इसमें सबसे कम crystal urea करने वाला कंपाउंड कौन है? Sulfa isoxazole. Metabolite is soluble in the acidic urine. It has a minimum risk of crystal urea. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको. Hematopoietic toxicity, ब्लड के ऊपर क्या टॉक्सिटी है? It can cause agranulocytosis. Thrombocytopenia. Sulfur drug tends to oxidize the hemoglobin to methemoglobin, and they cause the hemolysis in the patient with the deficiency of glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency.
मतलब जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का डेफिशिएंसी है, इसमें hemolysis करते हैं. Again, there is another adverse effect upon bilirubin metabolism. Sulfonamides compete with the serum bilirubin for albumin binding site and increases the bilirubin level in the plasma that result in the kernicterus or kernicterus. उसको अपन ये बोलते हैं क्या, पीलिया. Therapeutic use of sulfonamides, they are used in the UTI, urinary tract infection use करते हैं because of the meningococcal infection. They are also used in the ulcerative colitis, irritable bowel disease होता है उसमें. Also used in the Crohn's disease. They should not be used to treat established Staphylococcus pharyngitis. मतलब अगर Staphylococcus pharyngitis की वजह से, Staphylococcus की इन्फेक्शन की वजह से pharyngitis हो गया तो उसमें यूज नहीं करना है because they have got resistance. They are also used in the malaria in combination with the pyrimethamine, sulfadoxine plus pyrimethamine. Nowadays it is no more used because lot of drugs are available. Drug interaction, so as they are protein bound drug, they interact with the another drug like sulfonylureas, antidiabetic drugs. They get displaced from plasma protein binding and they can cause possible hypoglycemia. क्योंकि सल्फा ड्रग क्या करेंगे, जो एंटीडायबिटिक ड्रग है उसको प्रोटीन बाइंडिंग साइट से हटा देंगे. एंटी कोएगुलेंट ड्रग के साथ में भी इनका इंटरेक्शन, बिकॉज दे बाइंड्स टू द एल्बुमिन, एंटी कन्वर्जन, एंटी कोएगुलेंट, so they decreases the, you know, so there is a displacement of protein binding site. There is displacement of this drug from protein binding site and can cause adverse effect, right? Then जो आपकी NSAIDs है, NSAIDs नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, उसको भी ये सेम करेंगे. पहला ड्रग है आपका सल्फासेलेजिन. Sulfasalazine is a combination of sulfapyridine plus 5-amino-salicylic acid. So it is a prodrug. Sulfasalazine is a prodrug, and in the body it is metabolized to sulfapyridine and 5-amino-salicylic acid. So in the GIT it is broken down by azoreductase. एक एंजाइम होता है azoreductase, वो ब्रेक डाउन करता है सल्फासेलेजिन को in the sulfapyridine and 5-amino-salicylic acid. So sulfapyridine will exert its antibacterial effect and 5-amino-salicylic acid will exert its anti-inflammatory effect. So it is useful in the ulcerative colitis. So nowadays sulfonamides, they are no more used, but only in a combination. So only one drug is available, means cotrimazole. इसके ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. तो cotrimazole is a combination. It is a synergistic combination or superadditive combination of superadditive bactericidal combination of sulfamethoxazole and trimethoprim. cotrimazole मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम. को मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन. ट्राई फॉर ट्राइमिथोप्रिम है ना, मॉक्स फॉर सल्फामिथोक्साजोल है ना, मॉक्साजोल मतलब सल्फामिथोक्साजोल. सो सिनर्जिस्टिक कॉम्बिनेशन ऑफ sulfamethoxazole plus trimethoprim in a proportion of 5:1. इसका proportion क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी. in a proportion of 5:1. in a proportion of 5:1. so in that 400 milligram क्या होगा? सल्फामेथोक्साजोल होगा. सल्फामेथोक्साजोल 400 milligram 80 mg is nothing but the trimethoprim and है ना, ये they have these two drugs have similar T half. ये दोनों का भी T half जो है, half life जो है similar होता है, and that's why these are the two drug combined. Trimethoprim is a different drug which inhibit the dihydrofolate reductase enzyme, and first sulfamethoxazole inhibit the dihydroterate synthetase. मतलब folate synthetase enzyme inhibit करता है sulfamethoxazole and folate reductase enzyme inhibit करता है trimethoprim. And because of that there is a sequential blockage of folic acid synthesis, and this synergistic combination has more than 5,000 times potent activity than
normal sulfonamides. Now, sulfonamides, they are a bacteriostatic drug, but quatramazole is a bactericidal drug. Yeah. क्योंकि ये कॉम्बिनेशन क्यों किया है कॉम्बिनेशन? फर्स्ट है टू ऑब्टेन अ सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी, सेकंड है फॉर द पोटेंसी एंड आल्सो फॉर द साइडल इफेक्ट. तो ये देता है 3 रीजन की वजह से. और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? sequential block of synthesis of folic acid. Sequential block of synthesis of folic acid because sulfonamides act as a competitive inhibitor and substitute for folic acid synthase. Folic acid synthase के लिए competitive inhibitor है and trimethoprim is a dihydrofolate reductase inhibitor. There is sequential block. So adverse effect क्या रहेंगे? जो सल्फोनामाइड के एडवर्स इफेक्ट है वो तो रहेंगे, है ना, और जो ट्राइमेथोप्रिम के उसके भी रहेंगे. ट्राइमेथोप्रिम कैन कॉज नोसिया, वोमिटिंग, स्किन रैश, ग्लोसाइटिस, टोमेटाइटिस, एनीमिया, ल्यूकोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस क्वाट्रामेजोल शुड बी अवॉइडेड इन द प्रेगनेंसी बिकॉज इट कैन कॉज केराटोजेनिसिटी. और एक ही स्लाइड के ऊपर कम से कम 5 बार क्वेश्चन आ चुका है, एटलीस्ट 5 टाइम्स. क्वाट्रामेजोल क्या है, कॉम्बिनेशन कितना है, मैकेनिज्म क्या है, एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ड्रग. सो इट इज यूज्ड इन द यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्रोस्टेटिस मतलब इन्फेक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, इट इज अ थेरेपी ऑफ चॉइस, प्रोस्टेटिस. देन आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, ओटाइटिस मीडिया मतलब इन्फेक्शन ऑफ ईयर. GIT इन्फेक्शन लाइक सीजलोसिस, टाइफाइड फीवर एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. अभी ये टाइफाइड फीवर में आजकल नहीं यूज करते बिकॉज रेजिस्टेंस. टाइफाइड फीवर में ड्रग ऑफ चॉइस है आपका सेफ्ट्राक्सोल, सेफलोस्पोरिन, एंड एसटीडी में भी आजकल यूज नहीं करते. सो मैकेनिज्म ऑफ दिस क्वाट्रामेजोल, टेरिडीन प्रिकर्सर इज अ पाबा and formation of dihydrofolic acid. Bacteria will synthesize dihydrofolic acid from PABA, and dihydrofolic acid is converted into tetrahydrofolic acid. Okay? So dihydrofolic acid is synthesized by dihydroteroid synthetase and tetrahydrofolic acid is by dihydrofolate reductase. Right? Now sulfamethoxazole inhibit this formation of dihydrofolic acid by inhibiting the dihydroteroid synthetase, and trimethoprim inhibit the dihydrofolate synthetase, dihydrofolate reductase, to prevent the formation of tetrahydrofolic acid. So there is a sequential block of folic acid synthesis, that's why it is a more effective. और ये बेस्ट एग्जांपल है synergistic combination का. Again you can see the classification of sulfonamides. Short acting, शॉर्ट एक्टिंग में कौन है? सल्फाडायाजिन. इसको याद कैसे रखना है? डाई, ये जल्दी मर जाता है, जल्दी मरता है मतलब शॉर्ट एक्टिंग है. इंटरमीडिएट एक्टिंग में देखो सल्फामेथोक्साजोल, ये मिथो मतलब मीडियम टाइम के लिए चलता है, मीडियम टाइम के लिए. लॉन्ग एक्टिंग क्या है? सल्फोडोक्सिन, सल्फामेथोक्सिपाइरेजिन, ये लॉन्ग एक्टिंग है, इंपॉर्टेंट है. स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स, जैसे सल्फोसेटामाइड is used for ocular infection, sulfasalazine is used for GIT infection, silver sulfadiazine is used for burn therapy, mepenide is used for anti-malaria. Now next drug है आपका क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल. क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल, क्विनोलोन क्या होता है? ये these are the drug known as a fluoroquinones. So in the 17th century ना, ये इसमें एक पहला मॉलिक्यूल आया था नैलिडिक्सिक एसिड. तो इसमें देखो नॉन है ना, दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, क्विनोलोन एंटीबायोटिक, क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल, बिकॉज दे आर क्विनोलोन रिंग. इसमें क्या है? क्विनोलिन रिंग होता है. तो दीज एंटीबायोटिक्स विल हैव क्विनोलोन रिंग, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स. क्विनोलोन एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स. First member of this family is a nalidixic acid. So it is a non-fluorinated quinolone. क्योंकि ये पहला मेंबर था
and it is no more used nowadays. And after that, you know, fluorination, introduction of fluorine group at a 6th position of quinone ring. जब फ्लोरीन ग्रुप ऐड किया 6th पोजीशन में, तो नए मॉलिक्यूल बनाए नोन एज अ फ्लोरोक्विनोन्स, एंड दैट्स व्हाई इसको नॉन फ्लोरोक्विनोन बोलते हैं, फ्लोरोक्विनोन्स, राइट. सो इसमें भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन है. तो पहले तो फर्स्ट जनरेशन कौन है? नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेप्फ्लॉक्सासिन. तो इसको याद कैसे रखना है? इसको कैसे भी याद रख सकते हो आप, जैसे है ना NCPO है ना, NCPO. देन सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स, इसमें आएगा लिवोफ्लॉक्सासिन. लिवोफ्लॉक्सासिन क्या है? इट इज अ लिवो आइसोमर ऑफ ओफ्लॉक्सिन. ओफ्लॉक्सासिन है उसका ही लिवो आइसोमर लिवोफ्लॉक्सिन. देन नेक्स्ट है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, प्रोलीफ्लॉक्सासिन, लोमे एंड स्पारफ्लॉक्सासिन. तो स्पारफ्लॉक्सासिन, लोमेफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, प्रोलीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, दे आर द डाइफ्लोरिनेटेड एनालॉग. इसमें 2 फ्लोरीन रहेगा. देयर आर 2 फ्लोरीन ग्रुप्स. दे आर द डाइफ्लोरिनेटेड फ्लोरोक्विनोन्स with the that improved activity. That's why second generation. इनको ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में भी एक्टिविटी, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट में भी. तो सी द एक्टिविटी, डोंट वरी. ओके. तो उससे पहले नाइट्रोफ्यूरॉन है, तो उससे पहले नाइट्रोफ्यूरॉन एंटीबैक्टीरियल है. नाइट्रोफ्यूरॉन एंटीबैक्टीरियल, दे आर आल्सो यूज्ड एज अ यूरिनरी एंटीसेप्टिक. तो नाइट्रोफ्यूरॉन एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो, these nitrofuran, furazolidone, है ना, nitrofurantoin like that. So they undergo enzymatic reduction in the high enzymatic reduction in the they undergo enzymatic reduction and gives highly reactive intermediate that can damage to the DNA of bacteria. Also has some radiomimetic and mutagenic property. तो spectrum of activity देखो इनका, against they are active against the staphylococci, स्ट्रेप्टोकोकाई, ई कोलाई, साल्मोनेला एंड सिजिला. सो इसमें ड्रग्स लाइक फ्यूराजोलिडोन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, वजना का इन्फेक्शन करता है. देन न्यूफ्यूरोक्सिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट द कैंडिडिया अल्बिकन्स एंड अदर फंगाई. दीज ड्रग्स आर आल्सो अगेन बैक्टीरियोस्टैटिक इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बैक्टीरिसाइडल इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, है ना. दे आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी इन्फेक्शन. आजकल नहीं यूज कर रहे, आउटडेटेड है. एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, नोशिया, वोमिटिंग, रैशेस हो सकता है. hemolytic anemia, and there is a hemolytic anemia in the patient deficiency with a जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजन डिफिशियंसी है, उस पेशेंट में ये क्या करेगा? हेमोलाइसिस. सिस्टमिक ल्यूपस इन ड्रामेटस लाइक रिएक्शन, है ना. देन पॉलीन्यूराइटिस with the impaired renal function. तो यूरिनरी एंटीसेप्टिक बोल के एक ड्रग यूज किया जाता है, नाइट्रोफ्यूरांटाइन. आजकल अभी भी यूज किया जाता है इसको, नाइट्रोफ्यूरांटाइन. सो फूड इंक्रीजेस द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ड्रग. इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय नाइट्रोजन रिडक्टेज टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीजन रेडिकल व्हिच डैमेजेस द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. सो इट इज एक्टिव बिलो 5.5 pH. Alkalization of urine decreases the activity of this drug. It is a drug of choice in case of complicated UTI. ये drug of choice होता है complicated UTI. Drug does not appear in the urine as drug does not appear in the urine in the several renal failure or azotomic patient. renal failure तो इसमें नहीं आएगा.
This drug can color the urine brown coloration of urine करता है, and it is a drug of choice nitrofurantoin, और इसका immediate release drug formulation जैसे फॉर एग्जांपल है ना नेप्टास या फिर नाइट्रोब्लास्ट, इस टाइप के ड्रग, तो उसके नाइट्रोब्लास्ट एंड नेप्टास नाम के ट्रेड नेम के ड्रग आते हैं इसके. देन फ्यूराजोलिडोन, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जीआई इन्फेक्शन लाइक एंट्राइटिस, बैक्टीरियल एंट्राइटिस एंड डिसेंट्री, जियार्डियासिस. टॉपिकली भी यूज करते हैं फॉर ट्राइकोनोमल वैजिनालिस. न्यूफिरोक्सिन, active against the Candida albicans and vaginal pathogen, used along with the furazolidone topically. furazolidone डायरिया डिसेंट्री में यूज करते थे. एक पीले कलर की गोली आती थी है ना, अभी तो ये ओटीसी ड्रग बोल के भी यूज सेल करते हैं लोग. नाइट्रोफिराजोन, ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिकल वुंड, स्किन इन्फेक्शन एंड सिस्टमेटिक एलर्जिक है ना इन्फेक्शन. An allergic reaction can occur with this drug. Now, quinolone antibiotics, as I told you, they are useful, particularly useful. You know, fluoroquinones are important. They have broad spectrum of activity. तो फ्लोरोक्विनोन्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी. तो अपन ने देखा है क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म एक्शन. तो quinolones inhibits. What they inhibit? They inhibit the DNA gyrase present in the gram-positive bacteria. Present in the gram-positive. DNA gyrase होता है gram-positive. This enzyme responsible for the nicking of double-stranded DNA and introduction of negative supercoiling, and then reseal the nicked ends. Because during the replication के दौरान अपन ने देखा है, एट वन साइड डीएनए हेलिकेज विल ओपन द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअस ओपनिंग ऑफ डबल हेलिक्स देयर इज अ स्ट्रेन एट अनदर साइड, देयर इज अ सुपर कॉइलिंग एट अनदर साइड दैट शुड बी रिलीव्ड. सो द एंजाइम डीएनए गायरेज प्लेज रोल. सो दिस डायरेक्ट एक्शन लीड्स टू अरेस्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. नाउ फ्लोरोक्विनोन्स इनहिबिट दिस एंजाइम डीएनए गायरेज and prevent the negative supercoiling of drug, right? And in the gram-negative bacteria, same enzyme है ना, ये एंजाइम डीएनए गायरेज नहीं होता है, उसमें ये डीएनए टोपोआइसोमरेज होता है, डीएनए टोपोआइसोमरेज 4. दिस एंजाइम अगेन हैव सिमिलर फंक्शन टू द डीएनए गायरेज and that is inhibited in the gram-positive bacteria, gram-negative bacteria. So DNA topoisomerase 4 enzyme is involved in the nick and separate the daughter DNA strand after replication. This also leads to arrest of inhibition of this leads to arrest of DNA replication, also by blocking the enzymes normal function of delinking of daughter DNA. Yeah. Now in the host cell, जो human cell है आपका, in the host cell or in the human cell, the negative supercoiling is caused by DNA topoisomerase 2. तो ह्यूमंस में ये DNA topoisomerase 2 करता है, बैक्टीरिया में कौन सा करता है, DNA गायरेज करता है, DNA topoisomerase 4 करता है. ग्राम पॉजिटिव में DNA गायरेज करता है, ग्राम नेगेटिव में DNA topoisomerase 4 करता है, और ह्यूमंस में कौन करता है, topoisomerase 2 करता है ह्यूमंस में. तो दैट्स व्हाई दिस ड्रग विल नॉट अफेक्ट योर नॉर्मल सेल, है ना. This drug does not affect your normal cell. That's why they have selective action for bacteria. Spectrum of activity देख लो किस किस के अगेंस्ट में एक्टिव है. So they are active against the gram-positive bacteria and gram-negative bacteria because of the action A and action B respectively. तो DNA गायरेज जो होता है वो gram-negative bacteria में होता है, DNA topoisomerase में gram-positive bacteria में होता है. Now, first member of this family was an aldehydic acid, mostly active in the gram-negative bacteria like E. coli, Shigella. इसके एडवर्स रिएक्शन बहुत थे, इससे एलर्जिक रिएक्शन, नौशिया, वोमिटिंग, डायरिया, फोटोसेंसिटिविटी, फोटो एलर्जी, सीएनएस में ड्राउजीनेस करता था, कन्वर्जेंस इन चिल्ड्रंस. दैट्स व्हाई इट इज नो मोर यूज्ड. इट कैन इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इन द चिल्ड्रंस आल्सो. इट इज नॉट यूज्ड.
तो उसके बाद में इसको रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ था. बिकॉज ऑफ दैट नाउ other fluoroquinolones they are synthesized. A lot of fluoroquinolones they are synthesized. This was the first member of this family. So let's see the generations of fluoroquinolones. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं. Generations of fluoroquinolones. Generations of fluoroquinolones. So fluoroquinolones they are classified into 4 generation. तो फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोन, आपको इसको याद ही रखना पड़ता है. फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोन दे हैव नैरो स्पेक्ट्रम, मतलब इनका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी एक पर्टिकुलर एक दो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही है. तो फर्स्ट जनरेशन में आता है नॉरफ्लॉक्सासिन, देन ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन. नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन, दे आर नैरो स्पेक्ट्रम फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स. सेकंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स में आता है लोमेफ्लॉक्सासिन एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन. थर्ड जनरेशन में कौन आता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीलिवोस्पार, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, स्पारफ्लॉक्सासिन एंड गैटीफ्लॉक्सासिन. दे आर द यूजर. आउट ऑफ दैट स्पारफ्लॉक्सासिन इज अ लॉन्गर एक्टिंग. अब फोर्थ जनरेशन में कौन आता है, दे हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी. फोर्थ जनरेशन इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है. तो प्रोवाफ्लॉक्सासिन एंड जेमीफ्लॉक्सासिन. याद रखना है नॉरफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन, दे आर द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स. सेकंड जनरेशन में लोमी एंड सिप्रो आता है. थर्ड जनरेशन में मॉक्सी, लिवो, स्पार एंड गैटी आता है. फोर्थ जनरेशन में आता है ट्रोवा एंड जेमी. ठीक है. तो स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड ये है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोरीन एट द 6th position of नाइट्रिक एसिड एंड एट अ पिपराजिन एट अ 7th position. देखो, सो इन 1917 1917 में, so there is a modification of this natric acid and there is introduction of fluorine group over 6 carbon in addition of this piperazine moiety at a 7th carbon. So increase the spectrum of activity and decrease the aerosol. So fluoroquinolones they came in a picture. They are divided into 4 generation: first generation, second generation, third and fourth generation. Now fluoroquinolones spectrum of activity. They are broad spectrum. They are having broad spectrum of action, effective against the gram-positive and gram-negative bacteria. Also have activity against the E. coli, Klebsiella, Protease and Protease mirabilis. They are highly effective against the Salmonella, Haemophilus influenza and microorganisms which are resistant to the penicillin, cephalosporins, aminoglycosides and chloroquine. Highly effective against the Mycobacterium tuberculosis. So ciprofloxacin, moxifloxacin, they are used in the tuberculosis also. These drugs can develop resistance to a drug. These drugs can develop resistance. Bacteria can develop a resistance to the fluoroquinolones by the genetic mutation. Particularly Pseudomonas and Staphylococcus, they can develop the resistance. The bioavailability of these drugs are excellent after oral administration. And कुछ compound है, compound like aluminum, magnesium, zinc, iron, calcium, they can form a complexes with these drugs in a GIT and decreases the bioavailability. Okay? Food will delay the absorption of fluoroquinolones. They are concentrated in the urine, kidney and prostatic tissue and achieve a therapeutic value in the lungs as well as bones. एडवर्स रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार इसके ऊपर आ चुका है मुझे. जीआईटी टॉक्सिसिटी में एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट. प्रोवाफ्लोक्सासिन कैन कॉज हेपेटाइटिस, सीवियर हेपेटोटॉक्सिसिटी.
याद रखना है, क्वेश्चन आ चुका है। प्रोफ्लॉक्सिन कैन कॉज हिपेटॉक्सिटी। सीनेस के ऊपर क्या एक्शन है? तो कंफ्यूजन, नर्वसनेस, एजिटेशन, hallucination, rarely can cause convulsions, especially in a patient receiving the isoniazid, theophylline and other NSAIDs. मेन एडवर्स इफेक्ट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। टेंडन एंड कार्टिलेज डैमेज, टेंडन एंड कार्टिलेज डैमेज, दे कैन रप्चर द tendons of shoulder, hands and that is known as the Achilles tendon. Repeated with these drugs require a surgical repair, require a surgical repair. अब ये क्या है? Tendon and cartilage damage that mostly occurs in the patient of 60 plus. जो 60 प्लस एज के जो पेशेंट है ना, एंड द पेशेंट हु आर अंडरगोइंग द स्टेरॉइड थेरेपी, जिनको स्टेरॉइड थेरेपी चालू है, और जो पेशेंट 60 प्लस है उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है, टेंडन्स एंड कार्टिलेज डैमेज. सो दे डैमेज द टेंडन्स एंड कार्टिलेज ओवर द पीरियड ऑफ 60, most common. And if it is there, so you have to discontinue the use of drug, you have to, sometimes surgical repair is required. So treatment should be discontinued if patient feels pain, inflammation and rupture of tendons. They can be avoided in the pregnant woman, nursing mothers and young children. So allergic reaction भी है इनको, allergic reaction also reported. They can cause photosensitivity, इनको याद रखना है, photosensitivity. Also can cause leukopenia, renal damage and acute renal failure. Questions आ चुके हैं. Tendon Achilles is the adverse effect of, tendon and cartilage damage is the adverse effect of. Already इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुके. Now uses क्या है इनके? Norfloxacin, so it is used in the treatment of UTI, urinary tract infection, है ना, जलन होना, पेशाब करते समय आपको जलन होता है तो UTI बोलते हैं उसको. So it is used in the, norfloxacin is used in the UTI, also used in the GIT infection. अगर आपको ये है क्या, डायरिया वगैरह हो रहा है उसमें यूज़ कर सकते हैं. एक टैबलेट आता है नॉरफ्लॉक्स टी-जेड बोल के, सिप्ला कंपनी का, इसमें नॉरफ्लॉक्सासिन होता है एंड टीनेडाजोल होता है. दैट इज यूज्ड इन द GIT इन्फेक्शन, डायरिया एक्सेट्रा. फार्माकोकाइनेटिक लेवल्स एंड काइनेटिक प्रॉपर्टीज, सीरम लेवल ऑफ दिस इज लो, ये पुअर बायो अवेलेबिलिटी होता है कंपेयर टू द यूरिन लेवल एंड मोस्टली मेटाबोलाइज्ड बाय रीनल एंड renal then hepatic metabolism. लीवर से ज़्यादा किडनी में मेटाबोलाइज होता है. नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अगेन सेम, यूज्ड इन द UTI, गोनोरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, बोन, जॉइंट इन्फेक्शन, स्पेशली कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव. ओफ्लॉक्सासिन एंड पेफ्लॉक्सासिन, they are similar to ciprofloxacin in use. Lomifloxacin is also similar in a norfloxacin in use. Sparfloxacin, levofloxacin. Levofloxacin is a levo isomer of ofloxacin. Gatiploxacin Esic ocularly use के लिए ये आई ड्रॉप्स उसका अवेलेबल है. Moxifloxacin, gemifloxacin, they are known as a respiratory fluoroquinolones. Spar, Levo, Gatti, Moxi, Gemi, they are known as a respiratory fluoroquinolones because of their excellent anti-pseudomonal activity, excellent anti-pneumococcal activity. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है. स्पारफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, गैटीफ्लॉक्सासिन, देन आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, जेमीफ्लॉक्सासिन, they are known as a respiratory fluoroquinolones. Why? Because they have excellent anti-pneumococcal activity. Levofloxacin is a levo isomer of ofloxacin. Ofloxacin and sparfloxacin are effective against the acid-fast bacilli and they are used in the treatment of tuberculosis and leprosy. They are the drug of choice in treatment of typhoid fever. ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड फीवर में भी, बट आजकल सेप्ट्राक्सोन इज ड्रग ऑफ चॉइस. तो दे वेर यूज्ड है ना बिकॉज ऑफ टाइफाइड रेजिस्टेंट टू द क्लोरम्फेनिकॉल, है ना. और सेप्ट्राक्सोन इज द मोस्ट लेवल ड्रग एंड फास्टेस्ट एक्टिंग
बैक्टीरियासाइडल ड्रग है ना, इंटरफ्यूर और टाइफाइड के, ये सेप्ट्राक्सोनिस सेफलोस्पोरिन ड्रग ऑफ चॉइस, थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन. दे आर यूज्ड टू ट्रीट द यूटीआई, गोनोरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, bone joint soft tissue infection, gynecological wound infection, gram positive gram negative septicemia and respiratory tract infection. यहाँ पे देखो स्पारफ्लॉक्सासिन एंड गैटिफ्लॉक्सासिन है ना, they can cause prolongation of QT interval, means they can produce arrhythmia. Gatiofloxacin is withdrawn from market due to its dysglycemic effect. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, डिसग्लाइसेमिक मतलब कभी ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है कभी कम करता है. गैटिफ्लॉक्सासिन इज ओनली नाउअडेज यूज्ड फॉर ऑक्यूलर, इट्स ऑक्यूलर इन्फेक्शन, सिर्फ आई ड्रॉप से यूज करते हैं उसको, नॉट सिस्टमिक. स्पारफ्लॉक्सासिन एंड गैटिफ्लॉक्सासिन कैन प्रोलॉन्ग द QT interval, can produce arrhythmia. Gatiofloxacin can cause dysglycemic effect. So fluoroquinones which are withdrawn from the market, because of their respective adverse effect, like say temafloxacin is withdrawn due to hemolytic anemia, provafloxacin is withdrawn due to hepatotoxicity, grapefloxacin due to cardiotoxicity, cinafloxacin due to phototoxicity. Also CNS adverse effect are there. Seizures is increased with concurrent use of NSAID and fluoroquine. और फ्लूलीफ्लॉक्सासिन जो है, फ्लूलीफ्लॉक्सासिन इज अ प्रोड्रग ऑफ यूलीफ्लॉक्सासिन. फ्लूलीफ्लॉक्सासिन इज अ प्रोड्रग ऑफ यूलीफ्लॉक्सासिन. ये नया है ड्रग, नया है यह. बेलोफ्लॉक्सासिन इज डेवलप्ड न्यू जनरेशन फ्लोरोक्विनोन्स, नया है यह, डेवलप्ड इन द कोरिया. नाउअडेज इट इज मार्केट इन द कोरिया, जापान एंड इंडिया. बेलोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, नया है यह. फ्लूलीफ्लॉक्सासिन इज अ प्रोड्रग ऑफ यूलीफ्लॉक्सासिन, याद रखना है. दिस विल एंड योर sulfur drugs and your fluoroquinones. Tomorrow we'll see the penicillin, tomorrow we'll see the pharmaceutics, है ना. कल अपन फार्मास्यूटिक्स देखेंगे, बाद में कल आप फार्मास्यूटिक्स का एक चैप्टर देखेंगे, उसके बाद में पेनिसिलिन देखेंगे, ठीक है.